learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and today we are going to just do a revision of the chapter national income. Okay, so any of the boards, whether it is CBSE or IC students, can do the questions like this, and the marks are also allotted here. Okay, and ये एक आपका रिविजन की तरह होगा. इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ नेशनल इनकम चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ ताकि आप इसको आराम से सॉल्व कर सके. इसके मार्क्स देख लीजिएगा, कहीं पे 6 मार्क्स हैं, कहीं पे अलग अलग तरह की मार्किंग भी है. ओके, तो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं. राइट, एमसीक्यूज वगैरह के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हार्डली 6 और 7 है. आप आराम से इसको अपनी तरफ से भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं, और मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगी. राइट, so just you first you just take the screenshot. Okay, these are 2 questions of 3 marks each. Okay, then 4 marks each. You can take the screenshot and do the practice by yourself also. Okay, 6 long numericals, that is 6 marks each, and this is 7th last question. Okay, and the answers are also here. Okay, now what we will do here, I'm going to solve the question right here. जहाँ पे स्पेस है मैं वहीं पे सॉर्ट आउट कर दूंगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम. ओके, सो हियर वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल. इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मैंने आपको आंसर की ऑलरेडी उसमें दे दी है, तो आप इससे मैच भी कर सकते हैं क्वेश्चन. ओके, नाउ हियर देयर इट स्टेट्स हियर कैलकुलेट नेशनल इनकम. नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी. ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जो फाइंड आउट करना होता है वी ऑलवेज राइट हियर on the left hand side. जो गिवन है आपका, एक एग्रीगेट गिवन है NDP at FC. ओके, तो आप कॉमन चीजें देख लेंगे एंड देन फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज. ओके, ओनली दिस इज डिफरेंट. राइट, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे NFIA. लेट्स सी, NFIA इज गिवन, NDP at FC आपका है 2800 प्लस NFIA is 120. ओके, सो यू विल गेट हाउ मच? rupees 2920. mention here crore also. okay, and अलग से आंसर लिखेंगे आप, NMP at FC is equals to rupees 2920 crore. आंसर ये अलग से बॉक्स में मेंशन करिएगा बिकॉज एग्जामिनर विल गिव यू द मार्क्स ऑन प्रेजेंटेशन. ओके, so the next question is calculate per capita income. per capita means average income. so average income per capita income का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? is equals to national income upon population or total population upon total income. okay, so write the formula here. 4500 upon 150, so you will get 30. so आंसर आपका आ जाएगा, पूरा लिखेंगे, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 30 करोड़, और इसको एक बॉक्स में करके फिल कर देंगे. राइट, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. टेक द स्क्रीनशॉट. इसी तरह आपको आंसर जो है करने हैं. राइट, मैं इसलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. though I have already shared the answers also, but still I'm trying to do my best so that मेरे students कुछ problem ना हो solution करने में. and please do mention crores and lakhs whatever is there. okay, then the next part here, जल्दी जल्दी हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं. please pause the video and try it by yourself. okay, now calculate GDP at MP. so जो मुझे लेना होता है GDP at MP वो मैं लेफ्ट में रखूंगी. एक और एग्रीगेट गिवन है NDP at FC. ओके, तो नेट से जब हम ग्रॉस पे जाते हैं तो हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट इज डोमेस्टिक इज सेम, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम. फैक्टर से जब आप मार्केट पे जाते हो तो ऐड करते हो NIT. तो NIT देखो कहीं गिवन है, यस इट्स गिवन हियर लाइक दिस. सो NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी. मैं शॉर्ट में लिख लूँ, आपको पूरा मेंशन करना होगा. तो IT कितना है आपका 500 माइनस 200, you will get 300. NDP at FC कितना है 3600. depreciation given है 400
प्लस NIT कितना कैलकुलेट होके आया 300. ओके, सो यू विल गेट रुपीज 3600 plus 400 plus 300. So you will get 4300 करोड़. करोड़ में आंसर्स है ना, तो उसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है, रुपीज 4300 करोड़ इज योर GDP एट MP. आई होप समझ में आ गया ये आपको. नाउ लेट मी रब दिस ऑल्सो एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, जिन्होंने पहले के वीडियोस देखे हैं आप आराम से खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं. नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट स्टेट्स हियर. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कैलकुलेट NDP एट FC. ओके, सो इट मींस NDP एट FC इक्वल्स टू क्या होगा, GDP एट MP. GDP एट MP, फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोस. ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे then you will minus depreciation, then domestic and product, सब सही है, ऐसे ही रहेगा. now मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT. now let's see NIT कितना गिवन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं. NIT इक्वल्स टू IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. मैं शॉर्ट में लिख लूंगा, आप हमेशा वो लिखेंगे. इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 800 है, सब्सिडीज आपके 300 है, so you will get 500. okay, so now we can put the values. GDP at MP is 7000, depreciation minus 600, साइन वही लगाते चलिएगा, minus 500 हमारा आया net indirect taxes. now how much you will get, 7000 minus 600 minus 500, right? you will get rupees 5900 crore, and you will write like this: NDP at FC is equals to rupees 5900 crores in a block. और इस तरह अलग से इसको हाईलाइट कर, दिस इज योर आंसर. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. इसी तरह प्लीज सॉल्व करिएगा ताकि हर स्टेप को आप जो है आराम से देखेंगे और ये प्रूफ भी करते जाएंगे कि ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्टली सही है, राइट, करेक्ट है. तो इससे आपको स्टेप बाय स्टेप भी मार्किंग होती रहेगी. Now let's do the fifth one, national income. Very quickly here. National income means NNP at FC. Okay. National income means this. Now aggregate दूसरा क्या given है, NNP at FC equals to GDP at MP. Follow the rules, that is the arrows. Net हम gross से net पे जाएंगे तो minus करेंगे depreciation. Domestic से जब हम national पे जाएंगे then what we will do, add NFIA. and market से जब आप factor जाएंगे तो minus करेंगे net indirect taxes. now let's see indirect taxes, subsidies. okay, तो NIT net indirect taxes short में लिखा है मैंने. indirect taxes minus subsidies, indirect कितना है आपका 700 minus 200, so you will get 500. okay, now put the values. GDP at MP आपका है 9000 minus depreciation 900 plus NFIA 300 minus net indirect taxes 500. इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 9000 minus 900 plus 300 minus 500, you will get 7900 crores. okay, please take the screenshot और ब्लॉक में करके आंसर मेंशन करिएगा. okay, meanwhile I'm just rubbing it. you do the other question and just see क्या आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. these are very simple questions. okay, now next question is 6, long numerical. here what, let's see what how we can do. okay, now you need to find out two things, that is GDP at FC. पहले हम GDP at FC कर लेते हैं, right? but before that we can see कि पहले कौन सा मेथड अप्लाई करना है. यहाँ पे वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, NFI है, तो इसका मतलब है आपका इनकम मेथड अप्लाई होगा. नाउ इनकम मेथड में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, NDP at FC, राइट. जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था राइप एम, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह का था ना, राइप एम. इसमें जो जो चीजें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं. तो रेंट गिवन है, यस रेंट गिवन है 600 प्लस इंटरेस्ट गिवन है 400
प्लस प्रॉफिट 800 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस आ जाएंगे 2200 और मिक्स्ड इनकम कहीं नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे या नहीं भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो इसका टोटल आपका आएगा रुपीज 4000 आ रहा है, राइट, करोड़, ओके, करोड़ में आंसर है, राइट, 4000 करोड़ आ गया। अब इससे हम ये वाला एग्रीगेट निकाल सकते हैं, दैट मीन्स जीडीपी एट एफसी, ओके, ये फर्स्ट वाला मैं कर रही हूँ, जीडीपी एट एफसी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, कॉमन सब चीजें हैं और बस खाली ग्रॉस और नेट का करना है। तो नेट से जब हम ग्रॉस पे जाते हैं तो हम ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, रेस्ट इज फाइन। तो आपका यहाँ पे कर लो, एनडीपी एट एफसी है 4000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, कुछ नहीं गिवन है, तो ये 4000 ही हो जाएगा, ओके। यानी कि जीडीपी एट एफसी हमारा कितना है, ये हमारा कैलकुलेट होके आया है 4000 करोड़, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का क्या है, नेशनल इनकम निकालना है, तो हमें ऑलरेडी मेरे पास है, ये पहले लिख लेंगे, एनएनपी एट एफसी जो हमें कैलकुलेट करना होता है, एनडीपी एट एफसी, तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे एड एनएफआई, यही फॉर्मूला रहता है, राइट। एनडीपी एट एफसी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये 4000 प्लस एनएफआई 150 रुपीज 4150 करोड़ इज योर आंसर। ये दूसरे का आंसर क्या है, रुपीज, ये एनएनपी एट एफसी है 4150 करोड़, और ये आपका था जीडीपी एट एफसी, ओके। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू, जिन्होंने प्लीज पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जरूर से देख लें, बिकॉज इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, ओके। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिन्होंने वीडियोस देख रखे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, राइट। This is the last question, question number 7. Very quickly, please just pause the video and start. Okay, now calculate GDP at MP, NDP at FC and national income. So GDP at FC मेरे पास given है, right? So let's see here. First में हम करते हैं GDP at MP हम calculate करते हैं with the help of given है आपका GDP at FC, right? तो GDP is common. Now factor से market पे जब आप जाएंगे then you will add NIT. तो GDP at FC कितना है 5000 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो 700 माइनस 200 you will get 500, okay. So 500 is this rupees 5500, ये आपका आ गया GDP at MP, okay, इन करोड़, okay. ना सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, NDP at FC, तो NDP at FC और हम इसी से निकाल लेते हैं, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास है GDP at MP, इसी से कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस से गए हम नेट पे, तो माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इज सेम, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम, देन मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाएंगे देन व्हाट यू विल डू, मार्केट से फैक्टर पे जाओगे तो माइनस करोगे NIT, ओके। पुट द वैल्यूज, देखो कितना है, तो 5500 मेरे पास GDP एट MP कैलकुलेट हुआ था, माइनस करा मैंने डेप्रिसिएशन, इसमें 500 गिवन है यहाँ पे, ये देखो, ओके, एंड देन NIT हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे 500, I'll just write this, okay, rupees 5500 minus 500 you will get 4500 करोड़, ये आ गया सेकंड का भी आंसर। नाउ थर्ड में क्या है, इन्होंने बोला है निकालने के लिए नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है NNP एट FC, और मैंने कैलकुलेट कर लिया NDP एट FC, एक के बाद एक देखो मैं सब आराम से निकाले ले रहे हैं हम लोग, और हमें पता है व्हेन वी आर हैविंग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम तो इसमें हमें सिर्फ ऐड करना होता है NFIA, ओके। It's a request to all the new students,
और न्यू सब्सक्राइबर प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि इससे आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इजी क्वेश्चन हैं ये, राइट। तो एनडीपी एट एफ सी आपका कितना कैलकुलेट होके आया था, 4500 प्लस एनएफआई आपका गिवन है माइनस का 100, ओके। नाउ यू विल चेंज द साइन, प्लस माइनस minus 100. So you will get rupees 4,400 crore. So all three things we have already calculated. Hope you like the video, okay? And keep learning and keep practicing the questions, okay? Thank you for watching. Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and in this video we are going to discuss the answer key of the last 5-year board questions from this chapter, that is money and banking. These questions are very important from an exam point of view because they are frequently repeated in the board exams, okay? So I will explain how to write each answer properly. I'll give you the answer key also. You can take the screenshot and then you can easily just look at that, at how the answers can be done, okay? And what keywords you must include. So I will be providing to you the structure of your answer to score full marks. Now, please remember while writing your exam answers, that is, start with a clear definition, use proper headings, write answers and points, and always underline important keywords. Okay. Now, I'm going to share you first the questions that have been asked, okay, and then the answer key. So these are questions. You can take the screenshot. Okay. Credit creation by commercial banks is determined by, then all of the above or these. Okay, the answers are also being provided to you. Okay, then state the components of money income, M1, that is measure of money supply, then what is monetary policy, and how you're going to answer all these questions at the back of this, that is the after the questions have been given to you, then the answer key is also being provided in the same video. Okay, so you can take the screenshot. Fine. So there are almost 21 questions, I suppose, here from the chapter Bank, Money and Banking. Okay, yes, 21 questions. Okay, now here comes the most interesting part, that you're getting the answer key. Answers of all the questions one by one. Okay, so the first question was cash reserve ratio. Okay, that is correct alternatives. That is all the above. All the above was the answer. Okay. Then why the reason? The reason has been given. Okay. Then two components of measure M1 is currency with public and demand deposit with commercial banks, right? Then the third question was, that is monetary policy, and state three instruments of monetary policy. So first you are going to just give the meaning of the monetary policy, then three instruments of monetary policy, bank rate, repo rate, and cash reserve ratio, and then you're going to explain that. Okay. Or you if it's mentioned, then just do the means 2 lines में आप इसको explain कर सकते हो, right? Then the next question is 4A. It is state any two components हो गया, then elaborate any two instruments of credit control as exercised by the Reserve Bank of India. Okay. This one, the cash reserve ratio, how it is effective. If RBI decreases CRR, the banks have less money to lend and credit in the economy decreases. Okay. Then vice versa, then bank rate. If RBI raises the bank rate, borrowing from RBI becomes costlier. Okay, and commercial banks and lend less, and credit creation decreases. Okay, so like this you can answer. Okay, so simple to answer. See, मैंने आपको answer की भी provide कर ली. Now in this question number, write the question like this. Okay. And legal reserve ratio, for example, credit multiplier higher will be the total credit and vice versa. For example, आपका LRR is 0.2, that is 20%. Initial deposit is 1,000. So credit multiplier क्या formula क्या था? 1 upon LRR, that is equals to, you will get credit creation कितना था? Initial deposit is 1,000 and you are going to multiply with the credit, you will get 5,000. Whereas suppose now LRR आपका क्या हो गया है 0.5 and initial deposit 1,000 था, तो first of all आप क्या करेंगे, credit multiplier is equals to, formula पूरा लिखेंगे 1 upon LRR, that is
1 upon 0.5 in this question. So you will get 2, that is a multiplier is 2. So 2 into initial deposit, you will get 2000. Okay. Then correct answer for this question number 5. To reduce credit availability in the economy, the central bank may sell securities in the open market, and the reason is also being given. Okay. Then why other options does not don't reduce credit? The reasons are also being given. Then sixth question number, following is true or false. So the with reasons is also being given. Okay. So you can go through it one by one. Okay. Functions of central bank as a banker or agent advisor to the government. Then each function. Okay. Note issue function of the central bank is also been provided. Central bank as bankers bank. So all the answers have been given or provided to you in detail. Okay. You can take the screenshot one by one. Then a question is money credit banks. That is 13 question, 1000 primary deposits 250. How are you going to calculate the deposit or credit multiplier? Deposit multiplier is equals to maximum credit upon primary deposit, and then you will get 4. Okay, then find the reserve ratio, that is 1 upon deposit multiplier, reserve ratio formula, and then you're going to get 25%. That is option A is 4 and 25%. Okay, now the question number 14. Okay, so these are all theory questions basically. Okay, दो numericals थे वो मैंने आपको बता दिए, and rest are the theory questions. Okay, and this one is last question. Okay, question number 20, right? Question number 20 is of this one. Write the formula. Deposit multiplier 1 upon multiplier is equals to 1 upon RR, that is reserve ratio, and then you're going to get this answer. Okay. And if you like it, please do like, share, and subscribe. Follow for more. Thank you for watching. Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. And in today's video, I'm bringing you a score booster okay, series for the class 12 economics board exam. And in this video, we will discuss top 20 most important questions that are highly expected in the board exam, right? So if you prepare these questions properly, you can boost your score confidently and significantly, okay? So you can just keep your notebook ready, or you may take the screenshot, and let's start. We will discuss each and every question, okay? First, you take the screenshot, right, of the questions, and then I'm going to provide you the answer key also, okay? So these are the questions, okay? Top 20 highly expected questions in the board exam. One by one, we are going to discuss that, okay? I hope you have taken the screenshot. Okay, now the first one is what they are asking here. Explain the two-sector model of an economy. Now we know very well that is there are two sectors which we are going to consider, that is the household and the firm. So we will mention here that is the basic assumption about the economy is closed economy. There is only two sectors, that is household and firm exist. Then households are the owners of the factors of production, and firms produce goods and services. So there are only two types of flows, that is real flow and money flow. Okay. Then role of household, first of all, they provide the factors of production. We know it very well. That is the households provide land, labor, capital, and entrepreneur, okay, to the firms, and in return they get wages, rent, interest, and profit. Okay. So they spend their entire income on consumption. So in role of the firms, that is they hire the factors of production that have been provided by the household sector, right? And they use these factors of production to produce goods and services, and they sell these output to the household. Right, and the firms pay factor income, which they spend entire income on consumption of the goods and services that are produced by the firms. Okay, so these are the things that we need to discuss in this answer. Okay, answer is already being given to you. Okay, you can just make it, okay, write it like this, or in other ways. अगर कुछ भी पूछा जाता, for example, basic assumption of two sector model of an economy, कुछ तरह का question बन सकता है. Then you have everything there in the answer. Okay. Then circular flow of income, we know that is the real flow and money flow. Factors of production flow from household to firms, and goods and services flow from firms to household. Okay, and then money flow, where the involvement of money is there, it is the
Factor incomes flow from firms to household, and consumption expenditure flows from household to firms. So the conclusion you can also write here: two-sector model, incomes generated by firm is fully spent by household, making the circular flow of income continuous and complete, right? I hope this answer is perfectly fine according to 6 mark question. Okay, and if 2 mark का आता है तो आप उसको रोल ऑफ हाउस होल्ड या रोल ऑफ फर्म या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिफाइन करने के लिए आप उसी में से इसको निकाल सकते हैं, राइट? Now the next question: difference between stock and flow with suitable example. Now again I have given you the difference between in chart. You also have to follow the same thing. Okay, difference between हमेशा basis के साथ chart पे करेंगे आप. Okay, table बना के. Then meaning stock refers to quantity measured at a point of time and it is a period of time. Okay, measure over a period of time. ये हमेशा याद रखना और इसी को अंडरलाइन भी कर देना keywords को, right? Time factor, no time period is involved in stock, and in flow time period is involved. Then measurement, stock is measured on a particular date. तो जो highlighted part है that is the keywords. Okay, तो आप क्या करेंगे, keywords को भी आप भी पेंसिल से या पेन से highlight कर देंगे. Okay, the nature of the stock is static constant, whereas the flow is a dynamic concept and relationship that is a result of the past flows, that is the stock, and it leads to change in stock. Example, wealth on 31st March. अभी की कोई डेट अगर मेंशन की जाएगी, that is a stock concept, और जो पूरे साल चलता है that is the income during a year, or whatever the profit, okay, that is the flow concept. Then the third question is difference between final and intermediate goods. We know final का मतलब है जो easy to use, foreign के foreign use हो जाए, ठीक है? That is final consumption or investment. Okay, and intermediate goods are those goods which are used as inputs in production of other goods. The nature of users, that is a direct satisfaction मिलती है final goods से. Intermediate goods में further production के लिए वो जाता रहेगा, ठीक है, उसकी एक process चलती रहेगी. Then stage, these are at the final stage of the production, and intermediate goods, they are at an intermediate stage of production. Okay, then included, final goods are included in the, you can say, the calculation of national income, whereas intermediate goods are not included. Okay, purpose, they are meant for consumption or capital formation, and intermediate goods main purpose is for resale or production. Okay, then the examples are been also given there here. You can go through that. Then simple explanation, अगर one line explanation आता है, then you can just, final goods are used for final consumption, whereas intermediate goods are used for further production. इस तरह के example भी पूछे जा सकते हैं आपसे 1 mark में, MCQ में भी आ सकते हैं. You can easily go through that. Okay, then the next question is question number 4: explain production boundary in national income accounting. Okay, so the question, the meaning of the production boundary refers to the limit that defines which production activities are included and which are excluded. Okay, in simple words, it tells us what to count and what not to count. यानी कि including or not including in national income, वो आपको items बतानी. Okay, so first of all, only the goods that is produced, goods and services, वो हम include करेंगे. Activities बोलेंगे, they are meant for sale in the market, and non-market activities or non-market services with imputed value को हम account में लेंगे. ठीक है, include करेंगे production boundary में. Examples are given here. What is excluded from production boundary? Examples have also been given here. Okay, तो ये आपको अच्छे से इसके examples भी पता होना चाहिए, because sometimes in MCQ it's been asked. Okay, then what is the next question here? I think question number 5, right? Question number 5: explain the concept of resident, okay, normal resident and NRI. तो इसमें क्या, first of all, the concept of resident refers to the economic territory in which a person normally lives and earns income. जहाँ पे रह रहे हैं और आप income भी earn कर रहे हैं. Not the place of birth or nationality. जहाँ पैदा हुए उससे मतलब नहीं है, but you are earning and you are living there. Okay, that is the concept of residence. It is based on economic interest. यानी कि economic interest आपका क्या है? You are getting the money. Okay, you are doing some work over there. So meaning that a person is called a resident of a country, he she normally resides in the country, has a center of economic interest. Important point: a person may be an Indian citizen but non-resident, or a foreigner but resident of India. Okay, the normal resident simply lives in a country for a longer period of time and carries out regular economic interest, generally 1 year or more. Okay, so normal resident है. The non-resident, NRI जिसे कहते हैं हम, lives outside India and his center of economic interest is also abroad. Okay, then term concept of resident based on economic interest, not nationality. Resident का मतलब क्या है? Short में मैंने 1 line बताया, person with economic interest in the country, and normal resident living for a longer period of time. Okay, more than 1 year ऐसे हो सकता है. Then NRI, Indian citizen living and earning abroad. Then next question, explain 3 methods of calculating national income. We know there are 3 methods, that is value added method, then expenditure and income method.
तो आपका वैल्यू एडेड मेथड में है क्या, आपका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताया आपने। अब वैल्यू एडेड किस चीज में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स कम ले लेते हैं एंड देन फाइनल वैल्यूज की निकाल, हम उसको खाली कंसिडर करते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग। देन फॉर्मूला इज समेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर्स, राइट। एग्जांपल्स में दे रखा है and it is suitable for measuring industrial and sectoral contribution. Then income method में आपको बताया था RIPEM, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे नेशनल इनकम पे, मैंने हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, तो उसमें यही मैं मेथड यूज करती हूँ जिससे आप कभी भी कुछ भूलते नहीं, इसका भी कॉम्पोनेंट। ओके, द फैक्टर्स इनकम इंक्लूडेड, मेरा जो मानना है वो है जो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, RIPEM। R is for rent and royalty, then interest, then profit, then compensation of employees, and then mixed income. Okay, the formula is there, and then it's suitable for distribution of income. Then the next is expenditure method. Expenditure method में मैं जो लिखती हूँ फॉर्मूला, मेरे स्टूडेंट्स को पता है PNGG. Okay, PNG, that is private final consumption expenditure. Then आपका आ जाएगा N is for the net exports, then G is for government final consumption expenditure, and आपका the gross domestic capital formation. That is investment expenditure. Okay, and then we get this GDP is measured by adding all the final expenditure incurred on goods and services produced, so suitable for aggregate demand. Okay, so these were the methods, and इन तीनों का जो आंसर होता है, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे आपका इनकम मेथड हो, और वेदर इट इज एक्सपेंडिचर मेथड, आंसर तीनों का सेम आएगा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको बता दिया था उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या लेते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। सो एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑफ न्यूमेरिकल। आपको एक न्यूमेरिकल अगर बोला जाता है कि आप करके दिखाइए, एग्जांपल ऑफ व्हाट दैट इज, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, जीवीए, फैक्टर इनकम या डेप्रिसिएशन और एनएफआईए को लेके आपको खुद से बनाना है। So GVA temp for example 5,000 है, consumption is 500 and VA NFIA is 200. So first what we will do, GDP at MP है, okay, is equals to GVA at MP. तो हमने क्या किया, इसमें ऐड करेंगे depreciation, okay, and then what we will do, we will and then what we will do, we will first add depreciation और फिर उसमें NFIA ऐड कर देंगे, then you will get NF this one, okay, that is the following national income हमें कैलकुलेट करने को मिल जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर देंगे GDP at MP के लिए। GV at MP आपको गिवन है, तो उसमें हम करेंगे ऐड डिप्रिसिएशन, देन NNP at FC एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे GDP at MP, एंड देन वी विल ऐड NFIA, तो आपको मिल जाएगा ये आंसर, राइट। देन टू नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स, तो टू नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे आपके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज GDP, okay, total monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country, okay, during an accounting year. So resident और non-resident दोनों का आ जाता है इसमें, then market price और factor cost, and then excludes intermediate goods, okay. The national income we know that is refers to sum of all factor incomes earned by normal residents of a country during a accounting year, and then formula is this, okay, GDP at MP में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे depreciation plus NFIA, we will get NNP at FC, okay. So these were the things which have to be included to the national income concepts, okay. Then question number 10, measures of money supply, M1, M2, M3, M4, इन सबको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, राइट। You can take the screenshot. Money supply means first of all the total stock of money with the public, okay, in an economy at a given time. Then M1 आपका क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स विद CCDD OD, okay. Then M2 आपका क्या है, M1 में हम कर देंगे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऐड कर देंगे। M3 में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें M1 के कॉन्सेप्ट जितने भी M1 में आपके दिए गए हैं, CCDD OD, ओके, करेंसी एंड नोट्स, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, तो मैं इसको शॉर्ट में कहती हूँ CCDD ओके। तो इस तरह आप याद रखेंगे, कुछ कोई भी कॉम्पोनेंट आप भूलेंगे नहीं, ओके। तो इस तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर M4 में M3 के सब को आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे, प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग इंस्टीट्यूशन, ओके। एंड देन देयर इज अ स्मॉल क्विक कंपैरिजन टेबल, ये पूछा नहीं गया बट स्टिल आई हैव गिवन यू, आई हैव प्रोवाइडेड यू, ओके। तो अक्सर ये भी MCQ में पूछा जाता है कि मोस्ट लिक्विड कौन सा है, मोस्ट लीस्ट लिक्विड बट लार्जेस्ट,
तो इन सब चीजों में पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा आरबीआई फोकस करता है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज अच्छे से देखिएगा। ओके, now meaning of money supply, again total stock of money available in an economy at a particular point of time. Okay, and nature of money supply, that is a stock concept, dynamic है, then controlled by central bank है, different forms होते हैं इनके, influences economy. Okay, so this was the question number 11. Now we will move to question number 12. What is the difference between fiat money and legal tender money? The fiat money क्या है? Money whose value is not backed by physical commodity and it is declared as money by the government, that is like gold and silver. Okay, so its value comes from the government authority. It is widely accepted fiat money and can be in the form of currency, notes or coins. Whereas आपका जो legal tender money है, it is the kind of a money that must be accepted by the creditors or the payment of debt. Okay, जो भी हम payment करते हैं वो क्रेडिटर्स के लिए होता है, राइट, पेमेंट ऑफ डेट करने के लिए। देन क्रेडिटर कैन नॉट रिफ्यूज इट, और जिसको हम दे रहे पैसा वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, राइट। लीगल टेंडर मनी नॉन, वो पैसे वाला आगे ना, 1000 वाला जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1000 के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप कॉइन्स में भी दे सकते हैं। अगर आप जहाँ 1100 या 1001 रुपए भी होगा तो आप उसको कॉइन्स में अगर देंगे तो वो सामने वाला जो पार्टी है जिसको आप पे कर रहे हैं, क्रेडिटर है, वो रिफ्यूज कर सकता है। वो वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा मनी चैप्टर में। अगर आपको नहीं अभी भी याद आया, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो ऑफ मनी, ओके, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपको, राइट। सो this was the part of this question number 12. Now question number 13. 13 is न्यूमेरिकल करना है हमें NLRR से को लेके यूजिंग CRR और SLR। ओके, तो देखो NLRR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्शन ऑफ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट दैट इज अवेलेबल, जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास रह जाता है आफ्टर मेंटेनिंग द रिजर्व, जो मैंडेटरी होते हैं, दैट इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, ये नहीं कि जो होता है ये आपको बनाना पड़ता है किससे? मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो अब बोला गया कि 10% आपको आरबीआई के पास जमा करना है, तो वो CRR होगी, कैश रिजर्व रेशियो, तो हमने 10 रुपए आरबीआई में कर दिए, ठीक है। और ये अपने में, एस का मतलब है यहाँ पे सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब है अपने पास आप कितना रख रहे हो। कमर्शियल बैंक अपने पास कितना रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी 10% है, तो हमें 10% 10 रुपए उसके पास भी रखवा दिए। इसका मतलब है टोटल मैंने कितने जमा करे हैं एक रिजर्व में, दैट इज CRR में 10%, SLR में 10%, दैट इज 20% मेरे रिजर्व हो गया। 80% जो मेरे पास है वो मैं एज अ लेंडिंग पर्पज बैंक मतलब यूज कर सकता है, ठीक है। So that is known as NLRR, okay, Net Liquidity Recovery Ratio. तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम एक, यहाँ पे एग्जाम्पल देके दिया है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मेरे पास है, ठीक है, और मैंने क्या किया इसमें 4% आपका CRR था, यानी कि ये आपको आरबीआई को देना था, और SLR यानी कि 20% अपने पास रखना था, तो आपके पास बचा था 76% यू कैन यूज फॉर द लेंडिंग पर्पज। ओके, देन द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 इज difference between intrinsic value and face value of money. So actual value of the money, material, that is no intrinsic value, and face value printed or stamped. Okay, they're determined by the physical or material. इसका रियल है, फिजिकल है, और इंट्रिंसिक का एंड फेस वैल्यू क्या नॉमिनल है। ओके, चेंजेबिलिटी कैन चेंज विद द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल, यूजुअली कांस्टेंट। ओके, सो 10 रुपीज कॉइन मेड ऑफ मेटल वर्थ 6, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या होगी? 6 रुपीज होगी। और 10 का क्या होगा? ये कॉइन है, अगर इसका फेस वैल्यू है तो 10 ही रहेगा, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू आपका लीगल वैल्यू होता है बेसिकली। एक सिर्फ समरी में अगर आपको याद रखना है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, फेस वैल्यू इज लीगल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द मटेरियल वैल्यू ऑफ मनी। ओके, then question number 15 here, the what they are asking here, functions of central bank. तो देखो जितने भी functions थे वो हमने one line में कर दिए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। and memory tips for board, ILR, RMP, CF, तो ये सब आपके functions यहाँ पे given है, आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, that is a memory tip. okay, then again bank, Reserve Bank of India as a bankers bank, देन इसके फंक्शंस क्या होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाउ इट कंट्रोल्स क्रेडिट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देन क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट कंट्रोल टूल्स ऑफ आरबीआई। तो जितने भी टूल्स हैं ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्वांटिटेटिव को अलग कर दिया है, क्वालिटेटिव को अलग कर दिया है, ठीक है, एंड वन इसको जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया वन लाइन में। ओके,
So you can go through that, and one line में क्या है, quantitative tools control total credit while qualitative tools control credit for specific purposes. इसके आप जितना भी आपको डिटेल में जाना है तो आप प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ओके, और इससे आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, राइट. Then average propensity, you can say here the question number 18, write formulas for APC, APS, MPC, MPS. तो average का मतलब ही होता है आपका per unit, okay. तो Y यानी कि national income divided by consumption, okay. And then the formula is there, example is also there. Then APS क्या है, saving कितना कर रहे हैं आप, ठीक है. तो national income यानी कि that is Y is national income, APS is equals to Y by save, S is for saving, okay. And then again the definition is there, that is the proportion of total income that is saved. Then APS का ये भी फॉर्मूला कर सकते हैं, अगर आपको APC given है और बोला है APS करने के लिए, तो you can write here it is 1 minus APC, okay. Then MPC, that is the marginal, additional कितना हुआ, right. That is the fraction of additional income that is spent on consumption, explanation, and the formula is MPC equals to delta Y upon delta C. Then example given, then MPS again, it is the difference or the fraction, it is additional income that is saved, okay. Then delta Y upon delta S, यहाँ पे मैंने अपॉन का साइन लगाना मैं भूल गई हूँ, आप प्लीज इसको यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है. डेल्टा वाई और डिवाइडेड बाय डेल्टा एस होगा यहाँ पे, ठीक है. और अदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमपीएस, इफ एमपीसी इज गिवन देन 1 माइनस एमपीसी. देन डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनप्लान्ड चेंज इन स्टॉक. So what you can do here is this, that is, just wait. Inventory refers to the goods that a firm holds at any point of time, either for future sale, okay, and includes raw material and smooth production and meeting demand. Then unplanned change in stock, actual sales differ from expected sales, leading to unexpected increase or decrease in inventory. ठीक है. So one line answer क्या होता है इन्वेंट्री में, स्टॉक गुड्स हेल्ड बाय अ फर्म फॉर फ्यूचर यूज और सेल, जैसे हम रखते हैं जो, ठीक है. और अनप्लान चेंज इन स्टॉक है तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यू टू डिमांड वेरिएशन, डिमांड बढ़ी है कम हुई है उसकी वजह से जो अनप्लान्ड आता है, एक आपने प्लानिंग नहीं करी है. जो प्लानिंग करते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से आपका इन्वेंट्री है जो आप रखते हैं स्टॉक फॉर फ्यूचर सेल या यूज के लिए, ठीक है. दैट इज इन्वेंट्री. अनप्लान चेंज हुआ मतलब एकदम से डिमांड बढ़ गई और आपका जो है चेंजेस आ गए, अनएक्सपेक्टेड हो गया, इंक्रीज, ठीक है, या डिक्रीज कर गया, तो दैट इज नोन एज द अनप्लान चेंज इन स्टॉक. Then inflationary gap and deflationary gap, the difference is here, okay. You can go through this inflationary and deflationary gap, okay, and then the diagram is here. Fine. So with this we come to the end of this most top 20 important board exam questions, okay. If this video helped you, like and share it with all your friends. Comment done after revising all 20 questions and subscribe to Economics at Ease for more focused videos. Study smart, stay calm, and give your best. All the very best. Thank you for watching. Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to start the new questions of aggregate demand and related concept. In the last video or in the previous video, we have already done here till 3 questions, okay. So today we are going to start from 4th, okay. And the formulas I have already given you. Hope you like it. Please do like, share, and subscribe my channel. So first take the screenshot. These are all the questions from Sandeep Garg, okay. इसी तरह के आपको बाकी बुक्स में भी मिलेंगे, whether it is ISC और CBSE. मेन क्या होना चाहिए, हमारा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, okay. Clarity of concept is must, and with the help of that you can do any question, whether it is of any of the books, okay. किसी भी बुक से हो, किसी भी कहीं से भी आ जाएगा question, you can solve it, okay. So let's start here. Take the screenshot. Answers are already given. I'm going to just share the whiteboard, okay. And please keep on practicing. जो आपके अलग के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उसको भी आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा. बाकी जो पुराने चैप्टर्स में करा चुकी हूँ उसके भी, बिकॉज जितने मैंने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं
वो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ रहे होंगे। एंड जब आपको बस इतना करना है कि सबका रिविजन करते रहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, aggregate demand. I'm just writing AD and Sandeep Garg is your book. Okay. तो जिनके पास बुक नहीं है, ऑलरेडी यू हैव जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट विद यू। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट दैट। हमेशा आप भी इसी तरह करेंगे, राइट। गिवन इज व्हाट, हाउस होल्ड सेव ₹500 करोड़। ओके, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, राइट। तो इट मीन सेविंग इज गिवन ₹500 करोड़। ओके, इसी तरह इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे। आउट ऑफ एन एडिशनल इनकम, एडिशनल मतलब क्या हो गया, चेंज इन इनकम। इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ₹5,000। ओके, चेंज इन इनकम का मतलब एडिशनल इनकम, दैट इज डेल्टा वाई, या आप कह सकते हैं चेंज इन इनकम। ओके, देन कैलकुलेट एमपीसी। ये पूछ क्या रहे हैं आपसे, कैलकुलेट एमपीसी। तो एमपीसी का मतलब भी होता है चेंज का मतलब। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, यू नो द फॉर्मूला। नाउ वी विल डू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। सो हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट। हमें पता है कि जब हम इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट सेविंग फ्रॉम इनकम, देन वी विल गेट दैट इज द कंजम्पशन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम माइनस सेविंग। ओके, तो व्हाट यू विल गेट हियर, 5,000। आपकी ये चेंज इन इनकम है, माइनस सेविंग कितना है, 500। सो यू विल गेट चेंज इन कंजम्पशन आपका आ जाएगा ₹4,500 करोड़। ओके, एंड सिंस हियर द फॉर्मूला इज व्हाट, एमपीसी। फॉर्मूला आपको तो एमपीसी कैलकुलेट करना है ना, change in consumption upon change in income. Now we have the change in consumption also and change in income also. So we will just put the values 4,500 upon 5,000. Okay, so you will get 0.9. So MPC equals to 0.9 and this is your answer. उसको आंसर को अलग से हमेशा हाईलाइट करेंगे। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। Please take the screenshot of question number 4. Now the next is question number 5. Please ignore अगर आपको कुछ आवाज अलग से आ रही, because the construction is going on, okay, near my house. Okay, so just bear it with it. Now, if the total income increases, यहाँ पे क्या बोल रहा है, total income increases from 5,000 to 6,000. Okay, so given information, सबसे पहले given information लिख देंगे तो question की clarity बहुत ज्यादा होती है। Okay, so change in income is equals to 5,000 से कितनी हो गई, 6,000. Okay, ये 2 है, 6,000. So it means change in income में difference क्या है, 1,000. That means 6,000 minus 5,000, या हम कह सकते हैं y minus 1. Okay, ये new income से minus कर दी old income, so you will get 1,000. That is change in income. Okay, then what they are saying, and saving increases from 1,000 to 1,500. Now saving का increase कितना कर रहा है, change in saving is from 1,000 to 1,500. That means difference is 500. Okay, so saving 1 minus कितना हुआ, that means 1,500 minus sorry ये 1,000 करना है मुझे, तो 500 ही तो बचेगा ना, मैं तो इसलिए पूरा लिख के दिखा रही हूँ, राइट। नाउ कैलकुलेट एमपीसी। एमपीसी इसमें भी कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन आपका क्या है, एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो देखो चेंज इन इनकम तो मेरे पास ये है, दिस इज योर चेंज इन इनकम। अब चेंज इन कंजम्पशन में कैसे निकालूंगी, राइट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज चेंज इन
कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन हमें पता है कैसे होता है कि आपकी इनकम में से जो इनकम आपकी चेंज हुई है उसमें से हम कर देंगे सेविंग माइनस, राइट। तो कितनी मेरी इनकम चेंज हुई थी 1000, और सेविंग भी मैंने आपको चेंज करके दिखाया था, ये चेंज इन सेविंग था आपका। ओके, तो ये आपका है 500। इसका मतलब है कितना हो गया, चेंज इन कंजम्पशन इज 500। ओके, तो चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला। आई एम गोइंग टू राइट हियर चेंज इन कंजम्पशन दिस 500 अपॉन चेंज इन सेविंग इज 1000, गिवन है ना ये देखो, is equals to 0.5. So MPC equals to 0.5 and this is your answer. Okay, so simple. Now what we will do, question number 6. Please take the screenshot. Question number 6 में क्या बोले, if MPS, तो given आपको information है MPS equals to 0.3 and the income increases, यानी कि change in income, y को हमेशा income से डिनोट करते हो, तो y1 minus y, तो इनकम कितनी आपकी आ रही है 6000, सॉरी न्यू वाली इनकम मुझे पहले लिखनी है, राइट। ओके, तभी तो न्यू y1 मीन्स न्यू इनकम। ओके, सो 6000 to 9000, 9000 आपकी न्यू हो गई, 6000 that means rupees 3000 is your change in income. What will be the additional consumption? Additional matlab they are asking about additional consumption. Okay, so this is the given information. Now what we will do, I'm just going to start your solution. Okay, now delta C is equals to what? Delta C आपको पता करना है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ डेल्टा C कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट व्हाट वी विल डू हियर, MPS equals to change in saving upon change in income, right? यही फॉर्मूला है। Now we will just write the जिसकी वैल्यूज दी, ओके। एमपीएस की गिवन है वैल्यू 0.3 इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग मेरे पास अभी नहीं है, राइट। चेंज इन सेविंग एज इट इज लिखना, चेंज इन इनकम मेरे पास है दैट इज 3000, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 0.3। तो चेंज इन सेविंग हम कैसे कैलकुलेट करके निकाला हमने 900। नाउ वी नो चेंज इन कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम में से जब हम सेविंग माइनस कर देंगे तो अब चेंज आ रहा है ना यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा ये दैट इज कंजम्पशन। ओके, तो इनकम मेरे पास कितनी आई थी, इनकम थी मेरी इट इज 3000। ओके, एंड चेंज इन सेविंग आपका कितना है 900, so you will get rupees 2100, और क्या है करोड़ में आंसर है। ओके, so now you can write here change in consumption is equals to rupees 2100 crores. This is your answer. I think I have made myself clear. Okay, बस इनकम में से जब आप सेविंग माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कंजम्पशन, और अगर इनकम में से मान लीजिए कंजम्पशन सेविंग पूछा गया तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो सेविंग। ओके, वेरी सिंपल। जिनको ना समझ में आया प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर रखा है हर डायग्राम हर चीज। ओके, तो आप प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो दिया गया है इसमें कंप्यूट करना है हमको। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, बहुत सी चीजें कैलकुलेट करनी है। एपीसी एपीएस, देखो एक जब कैलकुलेट करोगे ना अपने आप दूसरा निकलता चला आएगा इसमें आंसर्स। तो एक आपको बस ये ध्यान देना है कि जितना भी आपको जो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है प्लीज उसको बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक हुई तो बाकी जितने भी आपके आंसर्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। ओके, सो योर इनकम में मैं वाई लिख देती हूँ, दिस इज योर सेविंग। ओके, तो इनकम कितनी है 200, देन 250, देन 300, देन 350 एंड देन 400। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, राइट, बहुत इजी है। सेविंग क्या है, पहले कुछ भी सेविंग नहीं थी, देन कंजम्पशन तो होता है ना, उस पर भी 5, 15, 20 एंड 50,
लाइंस पे प्लीज ध्यान मत देना, आड़ी बेड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप स्केल से करिएगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, ये सब मुझे कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? आई जस्ट राइट द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला से कर लेंगे हम, तो आप अपने आप भी आगे के इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या है आपका? कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे, हाँ सॉरी, कंजम्पशन भी तो निकालना है, पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही तो सब चीजें होंगी स्टार्ट, राइट? तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया है, जस्ट वेट हियर। सबसे पहले कंजम्पशन निकाला, फिर हमने एपीसी निकाला, फिर हमने एपीएस निकाला उसके, एंड देन एमपीसी एंड एमपीएस। मैं फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, आप इसको अपने आप करिएगा सॉल्व फिर। ओके, फिर एपीसी का हमें पता है कैलकुलेशन क्या होगी? सी अपॉन वाई। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एपीसी यहाँ पे निकला। सेकंड क्या है? एपीएस, तो सेविंग एपीएस सेविंग अपॉन वाई फॉर्मूला है। नंबर 3 पे क्या है? एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ओके, एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या है? एमपीएस इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ओके, so what you will do, just pause the video and just try to apply the formula. Okay, and then you can easily do the sum. So y minus s, यानी कि इनकम में से सेविंग हमने माइनस कर दी, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं था, तो ये 200 आ गया। देन इनकम में से सेविंग माइनस कर दी, तो कितना आ जाएगा? 245। यहाँ पे मैं लिखे हुए दे रही हूँ, इनकम माइनस सेविंग। ओके, 300 माइनस 15, दिस वाज 15। ओके, सो यू विल गेट 285। बस कैलकुलेट करते चले जाओ। 350 माइनस 20, 330, 400 माइनस 50, you will get 350. ना एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब है कंजम्पशन अपॉन दिस, दैट इज इनकम। तो कंजम्पशन मेरा 200 आया था, इनकम ये है 200 अपॉन 200, तो ये आ गया 1। 245 अपॉन 250, तो 0.98, ये कैलकुलेट कर लिएगा आप। ठीक है, देन 285 अपॉन 300, you will get 0.95, then 330 upon 350, 0.94, then 350 upon 400, 0.87। देखो मैं फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, राइट? इसको अपॉन करके। देन एपीएस मतलब सेविंग, ओके, अपॉन आपका नेशनल इनकम, इनकम सेविंग, ओके, डिवाइडेड बाय इनकम। सो सेविंग कितना है? कुछ भी नहीं है, और 200 से डिवाइड करा तो एपीएस कुछ भी नहीं आया, राइट? देन नेक्स्ट सेविंग कितना है? 5 अपॉन 250 अपॉन, हाँ नहीं, सेविंग अपॉन ये है ना आपका। सो व्हाट यू विल गेट हियर, दैट इज 0.02, 0.05। ठीक है, और कितना है आप प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, ये मत करना कि 350 अपॉन कर दो, फॉर्मूला उल्टा नहीं रखना है, राइट? जो सेविंग लिखा है तो सेविंग ही पहले आएगा, 20 अपॉन 350 होगा। ओके, तो इसका भी है 0.05। प्लीज अपनी अकल ज्यादा मत लगाइएगा, जो फॉर्मूला लिखवाए गए वही आप अप्लाई करें। ओके, नाउ एमपीसी इज व्हाट? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब देखो चेंज कितना आया है, ऊपर कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं रहा, और इसमें क्या होगा? इसमें भी नहीं है, तो ऊपर एमपी है, एमपीसी आपका ऐसे ही चला जाएगा। नाउ चेंज इन कंजम्पशन, 200 और 245 में डिफरेंस कितना है? 45, राइट? तो एमपीसी हम कैसे निकाल रहे हैं? 45, और इसमें कितना डिफरेंस है? दैट इज 200 और 250 का डिफरेंस है 50। ओके, तो 45 डिवाइड बाय 50 कितना आएगा? 45 डिवाइडेड बाय 50, यू विल गेट 0.9। ओके, तो इस तरह डिफरेंस निकालना है हमें, राइट? तो
इसमें कितना डिफरेंस है, 285 एंड 245 का डिफरेंस एंड 350 का डिफरेंस, तो आपका आ जाएगा आंसर 0.8। तो मैं ये आपको डिफरेंसेस नहीं बता रही हूँ, आप ऑलरेडी माइनस कर सकते हैं, मैं टेबल आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू जस्ट हैव टू नीचे से ऊपर वाला जो नंबर है आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली सेविंग में क्या होगा, डिफरेंस आपको देखना है, राइट। तो पहले में तो कुछ भी नहीं है डिफरेंस, ओके, उसमें आप बाद में क्या करेंगे, जस्ट वेट हियर, बाकी चीजें आप कैलकुलेट करते जाइए, राइट। चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ना इसमें क्या डिफरेंस है, 5 का हो जाएगा 5/50, राइट। तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 0.1, एमपीएस 0.2, ओके, देन 0.1 and then 0.6. So these are your answers. With the help of these formulas, okay, you can easily calculate. इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, मिसिंग नंबर्स भी आ सकते हैं इसी तरह। सो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। फॉर्मूला जो है वही आपको पुट करने हैं, उसी हिसाब से आपको वैल्यूज पुट करनी है, ओके, और इसमें बहुत अच्छे से करिए, ओके, 0 पॉइंट्स में इसमें आएगा आंसर, ओके, इट्स वेरी इजी, बट जस्ट रिमेंबर कि जो फॉर्मूला है वो सही आप अप्लाई करना, यही, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, ओके। सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस लाइक दिस एंड we will do in the next question, okay. Thank you for watching.